So कर रहे हैं सर. today we are starting capacitor and inductors. Okay, so you know what is capacitor? We have in capacitors we have two plates. Okay, so when we apply voltage, okay, there's two plates, between there is a dielectric. So when we apply a battery, okay, so it will deposit positive charge on one plate and negative charge to other plate. Okay, so we know that this these are metals. Okay, so metals have free electrons. Okay, so when we apply a battery, okay, so this battery will pull electrons. Okay, so there will be electron flow. Okay, current will be in this direction. So here there will be positive charge, and this electron will flow here in second plate. Okay, and this will be negative charge. So that's why we say that our capacitor is an energy storage device. Capacitor is energy storage device. Okay, because it stores imbalance of charge. Okay, sometimes people say capacitor is storage storage device. Okay, that is not correct. Okay, it do not store charge, because total charge to zero hai, plus minus. It creates imbalance of charge. Okay, so it stores imbalance of charge, stores imbalance of charge. Okay, so and we also know the relation between charge and voltage is given by CV. Okay, where C is the capacitance value, and in the case of parallel plate capacitor, C is given by EA upon D. Okay, where A is the area of the plate, D is the distance between two plates, and E is the permittivity of the medium. Okay, now if I want to increase C, okay, either I should increase A or material, dielectric constant material, or D. Okay, so in market what we have capacitors, their values are in picofarads. Okay, microfarad to picofarads. If I want to increase my capacitance in farads, okay, I want to increase very high, then area we cannot increase. Okay, area has a limitation. Okay, जो devices होती हैं उसमें area तो बहुत बड़ा नहीं ले सकते. And other thing is you use a material whose dielectric constant is very high. Okay, but then also there is a limit. Okay, dielectric constant कितना हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा. So then there is a limit. So if you want to increase the C, okay, you need to decrease the D. Okay, so if you somehow you bring D very small, micrometers, or in the case of super capacitor in nanometer, okay, तो आपको कैपेसिटर क्या मिल जाएगा, फैराड में मिल जाएगा. So in the case of super capacitor or electrochemical capacitor, okay, this D is very small. Okay, so this D is very small, so you can get very high capacitance value with super capacitors. Okay, so super capacitor was actually my research field, one of my field in my PhD. So I have worked a lot on these super capacitors. So now I want to calculate current. Okay, so current is dq upon dt. Okay, so this will be C dV by dt. Okay, so this is very important relation. So current, okay, flowing across a capacitor which has a voltage V. Okay, so it is given by C dV dt. Okay, so this is equation 1. Okay, this is the important formula you need to remember. So if I plot a graph, okay, versus I and dV by dt, okay, dV dt is called scan rate. Scan rate का मतलब voltage time के साथ में कैसे vary कर रहा है. Okay, so if I take a graph, so it will show a straight line y is equal to mx type of graph, and slope of this graph will give me capacitance value. So if I have a given voltage profile with respect to time for given capacitor, जो voltage हम apply कर रहे हैं उसका time के साथ में profile क्या है,
if you know that profile, we can calculate the current in the capacitor. Okay, clear है यहाँ तक? आगे चले। सर डीवीडीटी को क्या बोले? डीवीडीटी को बोलते हैं स्कैन रेट। डीवीडीटी इज कॉल्ड स्कैन रेट। ओके, स्कैन मतलब वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, ओके, लीनियरली बढ़ रहा है या किसी और शेप में बढ़ रहा है, ओके, चेंज इन वी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्कैन रेट। सो नाउ ये तो हो गया IV characteristics. Okay, I want VI characteristics, V relation between V and I. Okay, so I want to calculate if I'm giving current, okay, how voltage will vary across this capacitor. So I want V versus I relation. So if I integrate this one, okay, so this will give me 1 by C and this I dt. Okay, now capacitor is different than resistor. Okay, capacitor has a memory. Okay, memory कैसे है? Suppose equal to आएगा ना, V is equal to 1 upon C integration of I dt. V is equal to correct. V is equal to V as a function of time is equal to 1 by C I dt, and the limit will be minus infinite to some time t. Okay, now why I'm taking time as a minus infinite? So suppose we have a capacitor. Okay, and we are applying voltage. Okay, now ye capacitor, it may be charged in the beginning. Okay, suppose हम मार्केट से कैपेसिटर लेके आए, नया कैपेसिटर लेके आए, उस समय कैपेसिटर क्या है? That is called T infinite time. That time capacitor is unused. So at T is equal to infinite time, the voltage across this capacitor is 0. Okay, now after some time we use this capacitor in the laboratory in a circuit. Okay, and it has some potential, suppose say V1. Okay, and then we leave it. Okay, leave it, and after some other time again we start using this capacitor. So when we starting using this capacitor, there is only initial voltage is present. Okay, आइडियल कैपेसिटर में जो वोल्टेज एक बार उस पे आ गया, that will not decay. Okay, ideally, so there has some potential already present in the capacitor. So when we again starting experiment, we have to consider that potential कि इनिशियली कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, वो उसकी मेमोरी है, दैट वी हैव टू कंसीडर. दैट्स व्हाई आई पुट लिमिट हियर माइनस इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या है? सो आई कैन ब्रेक दिस लिमिट एज 1 by C minus infinite to T0, okay, I dt plus 1 by C T0 to T I dt. Okay, so in the beginning the potential Vt across capacitor is 0 when time is T infinite. Okay, and then some other time we use this one. Okay, and then we would keep it like that, and again we start the experiment at T is equal to 0. Okay, T is equal to 0, it can be T is equal to 3 seconds, 1 second, or T is equal to 0 time. Okay, again, so when we are again charging this capacitor, what is the initial stage of the capacitor we should know. उसपे पहले से कितना पोटेंशियल पहले से कितना पड़ा उसके ऊपर है at T is equal to 0, that we have to add. Okay, so if we simplify this one, this will give me 1 by C. Okay, so I dt is charge. Okay, so this will be Qt, limit will be minus infinite T0. Okay, so now if and this is 1 by C T0 T I dt. Okay, now Q minus infinite. Okay, Q is equal to 1 by C Q T0 minus Q minus infinite. Okay, अब जब infinite है time, okay, in the beginning, तो बिगिनिंग में तो कभी ना कभी ऐसा टाइम रहा होगा जब कैपेसिटर लेके आए नया, तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, हमने इसको सर्किट में लगाया नहीं था, तो Q infinite will be 0. Okay, so Q infinite is 0, so I can write here Q at T is equal to T0 or Q T0 upon C 1 by C T0 T I dt. Okay, so I can write now Q upon C is V.
So I can write now 1 by C, 1 minute, I dt, and this will be my V at t0 time. So at the time t, what is the potential at capacitor? अगर हमको calculate करना है, then we have to use this equation. We should know I and we should know at t is equal to 0 जब हम experiment start कर रहे हैं, when we are starting experiment, okay, at that time what is the initial voltage across this capacitor? So this is very important formula. सर हाँ. अगर हमने मार्केट से जो बाय किया और नया कैपेसिटर होगा, उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा वो मतलब चार्ज होने के पहले वो जीरो ही होगा। वो तो चार्ज होगा ही ना। भी अगर नया कैपेसिटर लेके आए हो किसी टाइम पे, शुरू में कभी भी बनाया है और आपने उसको सर्किट में डाला ही नहीं है, तो सर्किट में डाला ही नहीं है तो वो चार्ज है ही नहीं। ओके हाँ, मतलब उसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो मतलब वो चार्ज क्या वोल्टेज तो जीरो, तो वोल्टेज लगाया ही नहीं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर वोल्टेज है ही नहीं। ठीक है। हाँ सर, तो हम अब वोल्टेज जब काउंट कर रहे हैं तो वो टर्म क्यों इंक्लूड कर रहे हैं अगर वो नहीं वोल्टेज उसके बाद में इनफाइनाइट पे तो नहीं है, कभी ना कभी ऐसा टाइम यूज होगा हम नहीं किया, बाद में हमने कभी यूज किया कैपेसिटर को, ठीक है, उस पर कुछ वोल्टेज रह गया फिर हमने यूज किया, अगर नहीं है वोल्टेज तो जीरो ले लेंगे। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, अगर कैपेसिटर पहले से थोड़ा सा चार्ज है, उस पर पहले से जो वोल्टेज है तुम ऊपर से फिर चार्ज कर रहे हो, तो हमको फिर ये इक्वेशन करनी पड़ेगी फाइनल वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज पहले से ही है फिर चार्ज कर रहे हो तो फिर वोल्टेज और बढ़ेगा। ओके तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेट क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इनिशियल स्टेट में ये चार्ज है या अनचार्ज है या कितना चार्ज है या इसके ऊपर कितना वोल्टेज है, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है देन वी विल कंसीडर जीरो, देन वी विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0। क्लियर? सो नाउ वी हैव two important equations. ये equation बहुत important है. Okay, so we have current equation and then we have this voltage with respect as a function of temperature and time. ये दूसरी equation है. Now third important quantity in capacitor is power. Okay, because it is a power delivering device. Okay, I V into I. Okay, and we know VI is C dV upon dt. Okay, and if you calculate storage energy, so storage energy will be power into time minus infinite to t. Okay, so now if we calculate this power, so cv, okay, minus infinite c t, okay, this will be v dv. Okay, so if I calculate this one, so this will give me v square by 2. Okay, so half c and v square, limit will be minus infinite to t. Okay, at t is equal to infinite time there is no potential, so v minus infinite is 0. So this will give me well-known equation of capacitor. Okay, energy of a capacitor, okay, half cv square, which can be written as q square upon 2c also. So this is power and this is a formula for power. Say this is second important formula, this is third formula. Okay, now there are two more important things you have to remember while you are dealing capacitor in a circuit. Okay, so first thing क्या है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कैपेसिटर कैपेसिटर पे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ओके, सो यू नो द इक्वेशन फॉर कैपेसिटर इज C dV upon dt. Okay, now when I am adding a capacitor in a circuit, okay, so my voltage will not suddenly change. Okay, तो ये जो वोल्टेज जो कैपेसिटर पे आएगा इट विल कम स्लोली, इट विल टेक सम टाइम, 10 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड और 1 सेकंड, जो भी टाइम, जो भी आरसी कांस्टेंट होगा इसका. सो दैट मींस द वोल्टेज एट कैपेसिटर कैन नॉट चेंज सडनली. सडनली का मतलब क्या है? दिस इज V across the capacitor and this is time t. Okay, so at t is equal to 0 time, 0 पे इसका पोटेंशियल 0 है. Now suddenly it cannot rise.
suddenly it cannot rise. Okay, suddenly it cannot rise. Why? Because अगर ये suddenly rise हो जाएगा तो dv dt कितना हो जाएगा? Infinite, because this is a slope. Okay, dv dt क्या है? Slope है ग्राफ का. इस ग्राफ का स्लोप कितना हो गया? 90, और 90 हो गया तो क्या हो जाएगा? 10 90 इज इनफाइनाइट, तो dv dt इनफाइनाइट हो जाएगा. और dv dt इनफाइनाइट हो गया मतलब आपको इनफाइनाइट करंट चाहिए. if you supply infinite current, then only the voltage of the capacitor, okay, can suddenly come to this potential. Suddenly it will come to V. Okay, you applying V and it will jump from 1 to जो भी इसका potential V naught से V naught पे jump कर जाएगा. Otherwise, whenever you are adding capacitor, it will slowly charge. Okay, depending on its time constant. So I can write one important point. सर ये किस कंडीशन में आप बता रहे हैं जो अभी आपने बताया इनफिनिट स्लोप वाला? ये अगर आई एम टेलिंग दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल राइज इज नॉट पॉसिबल इन द कैपेसिटर, क्योंकि पोटेंशियल अगर सडनली चेंज करना है, जैसे मैंने वोल्टेज लगाया वो और लगाते ही अगर उस पर वी पोटेंशियल आ गया तो ये डीवी dt कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, सो इनफाइनाइट हो जाए तो उसके करंट चाहिए. दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो नॉट अलाउड. इस तरह का वोल्टेज प्रोफाइल increase of voltage with this time is not allowed. Okay, so your voltage can increase in this way. In this way it can increase or decrease. So voltage across a capacitor, voltage, ये बहुत important point है, voltage across a capacitor cannot change abruptly. ओके, जो इसका वोल्टेज है वो सडनली चेंज होगा, स्लो चेंज होगा. ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 1. ओके, so this is allowed. This type of voltage increase of capacitors allowed. Sudden increase is not allowed. Okay, that means capacitor voltage change का विरोध करता है. Okay, so then second important point is, now you are applying voltage across a capacitor. Okay, you are applying some voltage. Okay, and धीरे धीरे ये चार्ज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम दिस पोटेंशियल आल्सो V. ओके, जितना आपने पोटेंशियल लगाया वो वोल्टेज इस पर आ जाएगा. once this V is equal to this V, then there will be no flow of current in the circuit. Okay, कैपेसिटर के चार्ज होते ही इस सर्किट में देयर विल बी नो करंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जो है आपका सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. नो करंट मतलब जीरो करंट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट. ओके, दैट मींस वोल्टेज कैपेसिटर is open circuit to DC current. ओके, तो जैसे ही सर्किट में ये चार्ज हो जाएगा तो दैट मींस वी कैन राइट नाउ माय कैपेसिटर, ओके, इज इक्वल टू ओपन सर्किट. सर एक बार रिपीट करेंगे क्या ये पॉइंट? कर रहा ओपन हूँ. सर्किट फॉर डीसी सर्किट. डीसी सर्किट के अंदर आपका जो कैपेसिटर है दैट बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा, ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस माइनस, इसकी करंट यहाँ आएगा, इसकी करंट उल्टा आएगा. ओके, सो व्हेनेवर दीज टू पोटेंशियल आर बैलेंस्ड, ओके, व्हेनेवर V is equal to this potential across capacitor, after that what will happen? Your current नो फ्लो. see I is equal to C dV upon dt. so एक बार पोटेंशियल V पहुंच गया, उसके बाद तो पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं यहाँ पर. यस, dV dt जीरो हो जाएगा. यस सर. dV dt जीरो हो जाएगा तो आपका करंट जीरो हो जाएगा. करंट जीरो हो जाएगा Yes. मतलब ये क्या? ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ओके, so this is open circuit in DC circuits. okay, in steady state. in DC circuit, steady state का मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल फिक्स हो गया, ठीक है, एक टाइम के बाद में, एंड देन स्टेडी स्टेट ऑफ DC सर्किट दिस विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट. तो इससे क्या है, हमारे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये हमको पता है ओपन सर्किट. ओके, सो आगे चले. नाउ Yes, sir. Yes, sir. we'll solve some problems. Okay,
सर ये जो डीसी सर्किट वाली कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी है, क्या ये प्रैक्टिकली होती है? मतलब होती है, क्योंकि अगर डीसी लगाओगे तो प्रैक्टिकल है ही, डीसी लगाते ही हैं। ओके, डीसी से चार्ज करके छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, या फिर ठीक है उसके बाद होता है करंट पास होना बंद हो जाएगा सर? हाँ, वो तो जब अलग तक चीज है, टाइम वो तो अलग देखना पड़ेगा ना, तो वोल्टेज तो आ ही जाएगा सर्किट में। ठीक है, वो तो मतलब एप्लीकेशन देखना पड़ेगा कहाँ यूज करना है। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन। ओके, okay, we have a capacitor. Okay, C is equal to 1 microfarad. Its capacitance is 1 microfarad, and initially it is discharged. Okay, initially इस पे कोई चार्ज नहीं है, initially uncharged, initially uncharged. Okay, now इस capacitor पे we are applying a voltage, or we are applying current, so voltage is increasing. So this is the voltage profile, this is time v, voltage v, this is time t. Okay, and this value is 5. Okay, so this is the voltage increase over capacitor, is voltage increase and voltage decrease. Okay, we know I is equal to c dv upon dt. Okay, so if I charge this capacitor, okay, in one direction, so if I apply constant current, तो क्या हो जाएगा, dv dt भी constant हो जाएगा, तो आपका वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टाइम विल इंक्रीज. ओके, इसी करंट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्कैन रेट नेगेटिव हो जाएगा. ये क्या है, dv dt क्या है, स्कैन रेट. स्कैन रेट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज टाइम के साथ राइज कर रहा है. स्कैन रेट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज टाइम के साथ में ड्रॉप कर रहा है. तो अगर ये आई एक डायरेक्शन में है, ठीक है, उस कैपेसिटर में, देन dv dt, the voltage across capacitor will increase, and if you change the direction of current, तो जो पोटेंशियल था वो स्कैन रेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो दिस सेइंग, नाउ कैलकुलेट द करंट, calculate current. Okay, now time is given, this is 0 time, this is 1 second and 2 second. Okay, so now I have to calculate current. Okay, so I know current is IC dv dt. Okay, so first I want dv dt, so value of dv dt. Okay, dv dt की वैल्यू क्या है यहाँ पर, v is 5/1. 5/1, तो 5 हो गया. ठीक है, at time 0 to 1, so when time is 0 to 1. Okay, और यहाँ पे कितना है, -5/1. -5/1. ओके, dv 5 minus 0 t 1 minus 0, dv dt मतलब क्या है, वोल्टेज माइनस चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. सो 5 minus 0 डिवाइड बाय 1 minus 0, 5. ओके, यहाँ उल्टा -5, एंड दैट इज बिटवीन 1 to t 1 to 2. ओके, so either you write your dv dt in this way, और दूसरा तरीका क्या है, you write equation of v. Okay, now this is the line, equation of line. If I want to write vt as a function of t, कैसे लिखेंगे, vt. Okay, 5t plus 1. 5t पहले का. 5t आ जाएगा पहले, 0t1. ओके, उसके बाद में क्या आएगा, बाकी इक्वेशन के लिए ये तो लाइन का y इक्वल टू mx हो गया, तो -5t plus 10. तो अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तो 5t है, अब ये -5t है, -5t प्लस 10. 10. वेरी गुड. ओके, सो इस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, इस इक्वेशन लिखोगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो mx x क्या है, t है, प्लस c. ओके, तो स्लोप तो आपको पता ही है -5t है, जिससे बढ़ रहा है उसी से कम हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. बाकी c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू देख लो, t इज इक्वल टू 2 पे, y 0 है, तो आपका c क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, t इक्वल टू 2 पे, आपका y इक्वल vt इक्वल टू 0 है, तो 0. ओके, -10 प्लस c, तो c इक्वल टू 10. ओके, तो ऐसे दिस वे यू कैन कैलकुलेट what is the form, okay, equation of your v. Okay, so this will become 1t2. okay, अब इसको डिफरेंट, we want dv dt,
So dVdt you differentiate, this will come 5, this will come -5. तो आपकी चॉइस है, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख दो, वरना जो भी प्रोफाइल है उसका इक्वेशन लिखो, ओके, एंड इक्वेशन लिख के उसको डिफरेंशिएट कर दो, देन यू विल गेट dVdt. ओके, ये यहाँ तक ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. यस सर. बाकी लोगों को? महिमा? यस सर. ओके, वेरी गुड. तो अभी हमको dVdt मिल गया. नाउ आई वांट करंट. ओके, so current क्या हो जाएगा? current will be I, okay, I C dVdt. C कितना है? 1 माइक्रोफेरेड. तो ये 1 माइक्रोफेरेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 5 माइक्रोफेरेड. तो करंट कितना हो गया? 5 माइक्रोफेरेड फॉर टाइम 0 to 1, okay, and this will become -5 microfarad for t is equal to 2. So this is your answer. Okay, so हमने 3 फॉर्मूले देखे ना, 3 फॉर्मूले. एक तो देखा हमने करंट का फॉर्मूला. नाउ सेकंड वाज आवर वोल्टेज का फॉर्मूला. ओके, सो नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन ऑन सेकंड फॉर्मूला. ये मिटा दूं? Yes sir. Yes, sir. यस सर. Now second question is, again we are taking a capacitor, okay, whose value is C is equal to 1 millifarad. Okay, that is 1 into 10 raised to power -3 farad. Okay, and this is also initially uncharged. इसमें कोई potential नहीं है. Okay, initially uncharged. Okay, so and now we are charging this capacitor with a current, okay, I, okay, whose profile is given like this. Okay, so this is 100 milliampere. Okay, and time is given this one. This time is 2 milliseconds. Okay, this is 2 milliseconds. Okay, t in milliseconds. So this is 4, this is 6. Okay, so up to 2 is increasing, and after time 2 this is constant. 100 milliampere current is constant. Okay, so this is he asking, calculate the voltage across Vt at t is equal to 2 millisecond. What is the voltage across capacitor, and what is the voltage after at 5 millisecond? Okay, so 2 things it is asking. Okay, सबसे पहले तो क्या है कि t is equal to 2 सेकंड पे कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है, और t is equal to 5 पे यहाँ पर. ओके, t is equal to 5 पे इस कैपेसिटर के ऊपर कितना वोल्टेज है. ओके, सो I is given. So we know the formula. What is the formula? 1 by C, t is equal to T0 to T I dt plus V2 naught. Okay, now initially uncharged hai. Okay, so this is 0 in the beginning. Okay, so it is given V at t is equal to 0 is 0. Okay, so now t0 we can take our reference time, we can take 0. Okay, so now so this equation will become now 1 by C 0 t. t कितना है? 2 मिलीसेकंड. ओके, 2 मिलीसेकंड में इस पे कितना वोल्टेज है? 2 I dt. ओके, I dt. अब I कितना है बताओ? I कितना है? 100 by 2t. So 50 milliampere into t. 50 milliampere. नहीं, I is a function of time. तो I की इक्वेशन क्या है? 100 ना. 100. Yes. क्यों dv? ये t भी तो है. स्लोप क्या है? 50t. So 50t. Yes sir. 50t. Okay, slope is 50t. Okay, so y is equal to mx. So y is equal to I is equal to 50t. Okay, for time 0 for 0 to 2 second. Okay, so now I can write 50t. Okay, so now 1 by c 0 to 2 50t dt. Okay, so if I solve this one now,
Okay, so this will give me 1 by C. Okay, 10 to the power 4 0 to 2 50 बार आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास T dt. ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो 150 C की वैल्यू कितना है 1 मिली फैरड 100 by 2 T square by 2 and 0 to 2, this is a millisecond. Okay, so millisecond means 50 1 is to 10 to the power minus 3 4. Okay, 4 by 2 milliseconds. Okay, milli तो power 6 हो जाएगा millisecond. Okay, so now कितनी ये आंसर कितना आ रहा है, ये 2 हो गया 25 into 10 to the power minus 3. 100 millivolt. Okay, yes sir ये पावर 3 हो गया. तो अब क्या है, t इज इक्वल टू 2 मिलीसेकंड पे वोल्टेज कितना हो गया 100 मिलीवोल्ट. क्लियर है? यस सर. yes sir बाकी लोग? Yes, sir. sir. अजिंक्य? yes sir clear है sir ओके, सो नाउ सर अब मिलीसेकंड पे पावर तो 3 है ना, -3 कहां पर है? मिलीसेकंड टी स्क्वायर है ना, पावर 6 हो जाएगा ना, टी sorry. स्क्वायर है. ठीक है, ठीक है, चले आगे. Yes, sir. ओके, यस सर. ना अभी क्या है, हमको इस पोजीशन पे वोल्टेज पता है, उसके बाद हम करंट को कांस्टेंट कर दे रहे हैं. ठीक है, सो नाउ अगेन आई राइट वोल्टेज, आई वांट वोल्टेज एट 5 मिलीसेकंड. ओके, तो अगेन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी ओके आई डी टी. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2 because 2 already I know. Okay, 2 to 5 I want at 5 what is the voltage, and V क्या हो जाएगा, V at t is equal to 2 millisecond, that already we know. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग पोटेंशियल है. ओके, उसके बाद हम कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें. सो दिस इज माय इनिशियल पोटेंशियल नाउ. ओके, सो नाउ एंड नाउ I is constant. Okay, so again I can calculate now V. Okay, 1 by C. ओके, आई तो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, dt क्या हो जाएगा, t 5 minus 2, तो 1 by c is 1 into 10 raised to power minus 3. आई कितना है 100 मिली एम्पियर. ओके, dt 5 minus 2 3. ओके, मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड and plus this already we know 100 millivolt. Okay, now if you calculate this one, ये cancel हो जाएगा, तो कितना आ रहा है ये, this become 400 मिलीवोल्ट. 300 milliwatt plus 100 milliwatt, this become total 400 millivolt. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 400 millivolt. ओके सर एक बार रिपीट करेंगे. हाँ ये मतलब इंटीग्रेशन का ये कैसे लिखा, हाँ, समझ फिर जैसे नहीं आया. अभी देखो हमारा ये तो पता, यहाँ तक पता चल गया, t is equal नहीं, to ये भी समझा, वीटी का जो आपने लिखा है ना 1/6 फर्स्ट स्टेप है, वो भी हाँ समझ में आ गया. इनिशियल 2 मिलीसेकंड कैसे लिया. हाँ उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन आपने पहला ओपन किया ना, ये हाँ, कुछ समझ में नहीं भी आया. आई कांस्टेंट है तो आई बाहर आ गया, हाँ, तो 100 मिली एम्पियर ओके. बाहर आ गया. ठीक है, और ये dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा. ओके, ये आएगा सो 5 minus 2 3 3 मिलीसेकंड्स. मिलीसेकंड्स. ओके, फाइन. ठीक है, जी सर हाँ ये अगर 0 से 5 भी लेते, अगर सपोज क्वेश्चन में v of t नहीं दिया होता तो 0 से 5 लेते तो भी फिर ब्रेक करके वही आता ना. वो तो प्रोफाइल देखना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो फिर जीरो सीधे ही वो ले लो, जीरो इसको जीरो ले लो, और कांस्टेंट ये 0 से 5 हो जाएगा बस. हाँ आंसर तो सही नहीं, अगर वैसे भी है सर, सपोज मतलब सेम ही प्रोफाइल है सर, अगर 0 से 5 लिया तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा ना, वो पूछ रहा था. ये प्रोफाइल नहीं है, ये वाला नहीं है तुम बोल रहे हो. नहीं ये ही प्रोफाइल है. हाँ अगर हमने t0 0 से लिया 0 सेकंड से, हाँ, तो भी सेम ही आएगा. तो हमने 0 से तो लिया, 0 से लिया तभी तो यहाँ पे डी इस पे 2 पे ये आया. ठीक है, फिर इसको हमने स्टार्ट किया. ठीक है, इसको डी टी इक्वल टू 0 मान के स्टार्ट किया, तो 0 तो 2 2 to 5 3, तभी 3 सेकंड आया. तो उसको 3, इसको अगर 0 बोल दोगे देन यू टू टेल दिस इज 3 सेकंड. हाँ मतलब वही ब्रेक करके सेम ही आएगा, वही पूछ रहा था. ओके ओके, हाँ वो तुम करके हाँ एग्जैक्टली सेम ही आएगा. ओके, वो कंटिन्यू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन आई का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा बस, टाइम पीरियड में. ओके करेक्ट. वो सर ओके
सो अगर वोल्टेज प्रोफाइल दे रखी है देन वी कैन कैलकुलेट करंट, और करंट प्रोफाइल दे रखी है वी कैन कैलकुलेट वोल्टेज. ओके, नाउ थर्ड थिंग वी हैव डिस्कस्ड, सर्किट में इसको कैसे यूज करेंगे कैपेसिटर को. ओके, सो वन प्रॉब्लम ऑन सर्किट. ओके, okay, so this is a capacitor. Okay, this is one resistance 2 kilo ohm. This is 5 kilo ohm. Okay, and here we have a capacitor. ज़्यादा बड़ा circuit हो गया. And this one here. Okay, and we have one more capacitor here. Okay, say this is C1, say this is C2. Okay, and here we have one more resistance of 4 kilo ohm. Okay, this current value is given 6 ampere. So it is asking obtain the energy storage in each capacitor. Okay, obtain energy storage, okay, at each capacitor. Okay, now we know the energy storage in the capacitor is given by half C V square. Okay, तो C का वैल्यू दे रखा होगा, C का वैल्यू दे रखा है, this is C is given as 2 millifarad. Okay, this is 2 millifarad. And second is second भी दो ही ले लो, नहीं तो क्या होता है 2 millifarad. Okay, now calculate. So capacitance value is given. Okay, and then we have to calculate now this voltage value across this capacitor. Okay, that means यहाँ पर voltage कितना है? If I want voltage across this one, I want voltage here. Okay, if I want voltage here. Okay, so first we'll see how capacitor behaves to a DC. Okay, तो जैसे ही हमने DC लगा दिया, DC करंट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? सर्किट ओपन सर्किट की तरह करंट नहीं फ्लो करेगा कैपेसिटर से. तो थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाएगा? सर्किट ओपन हो जाएगा जहाँ कैपेसिटर है. ठीक है, करंट जीरो हो जाए. तो ये सर्किट ओपन हो गया यहाँ पर, दिस C1. ओके, so I want voltage here. Say this is voltage is V1. I want voltage across this capacitor to calculate energy. Similarly, ये भी open हो जाएगा. If this is open, say this is V2. Okay, this is C2, and now this is open. So once this is इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है ना? इनिशियल कंडीशन नहीं भी, ये तो स्टेडी स्टेट है. अब हमको ऐसा सर्किट मिला हुआ है, वो सर्किट चार्ज हो गया, इसके ऊपर जो वोल्टेज आना था आ गया, इस पे जो वोल्टेज आना था आ गया. ठीक है, उसके बाद ओपन हो गया, डीसी कंडीशंस. ओके सर, डीसी कंडीशंस. नाउ दिस इज ओपन हियर. अब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ओपन है. सिमिलरली यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये ओपन है. दैट मीन्स यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं. यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर नहीं रहा है. तो ये इस रेजिस्टेंस में करंट है ही नहीं, तो कोई ड्रॉप है ही नहीं. So this is, so now if I want to calculate voltage across this C1, I should calculate voltage across 2 kilo ohm. Similarly, if I want to calculate voltage across C2, I should calculate what is the voltage drop across this 4 kilo ohm. Okay, so now you see current is coming here. Okay, then it is going here. Okay, circuit एक बार मैं check कर लूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं है. 6 milliampere 2. Okay, here they are given one more 3 kilo ohm. 3 kilo ohm. Okay, 3 kilo ohm. And this one थोड़ा mistake हो गया मेरे सर्किट में. This is exactly same ही है. This is the capacitor here. थोड़ा इसको redraw कर लो. Okay, this is the circuit actually. तो 3 किलो ओम एक पैरेलल में भी लगा हुआ था. यहाँ 3 किलो ओम लगा हुआ है यहाँ पर. जो 2 किलो ओम है 3. ओके, नाउ अब ये क्या है, ये ओपन हो गया तो ये करंट यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा नहीं. करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, और यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे भी नहीं जाएगा, यहाँ पे भी ओपन है. ठीक है, तो करंट कहाँ जाएगा? ये 3 किलो ओम में जाएगा, 2 और 4 6 किलो ओम में जाएगा. 2 और 4 क्या है, 6 सीरीज में है. ओके, तो अगेन यू कैन अप्लाई करंट डिवीजन. तो इफ यू हैव करंट डिवीजन, तो इस वाले में करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा?
सर 3 into say I1, say I1, okay, I1. So तो ये पैरेलल है, so I will take 3 into 6 and sum of this Divided by 9. 9, okay, very good. 9. So 3 2 and 2 ये किलो ओम है, तो 2 मिली एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर 2 मिली एम्पियर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इज किलो ओम ना. चेक इट अगेन. मिली एम्पियर पे आएगा सर दोनों तो किलो है ना सर, चेक करने दो. वो 3 भी तो हाँ वेट 6 ओके 6 ये मिली एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है. ओके सर 3 मिली एम्पियर दे रखा है. दिस इज 3 into 6 9, ओके, किलो ओम तो किलो ओम में हो जाएगा, और मिली एम्पियर दे रखा है तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर. ओके नाउ कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो ओम कितना आएगा. V1 कितना आएगा. 4 वोल्ट आएगा सर. सर 4 मिली वोल्ट, सर 4 वोल्ट आएगा ना, 4 वोल्ट आएगा. और यहाँ पर कितना आएगा V2, तो यहाँ पे 8 वोल्ट, V2 8 वोल्ट आ जाएगा. ओके आप एनर्जी निकाल लो, हाफ C1 स्क्वायर हाफ CV2 स्क्वायर करके एनर्जी निकाल लो. C की वैल्यू दे रखी है 2 मिली फैरेड. तो सर वोल्टेज 4 वोल्ट कैसे आया V1? ये 2 किलो ओम है ना, यहाँ करंट है 2 मिली एम्पियर इनटू 2 किलो ओम, तो यही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है. हाँ सर V2 कहाँ लिया हमने? V2 हमने 4 के क्रॉस लिया है, क्योंकि ये तो ओपन है पूरा, ठीक है. सर U1 इक्वल टू 60 मिली जूल और U2 इक्वल टू 64 मिली जूल. V1 W C1 पर 16 मिली जूल, 16 मिली जूल, 60 मिली जूल, वेरी गुड, सही है. और W2 और V2 64 मिली जूल. 64, चलो ठीक है, 64 मिली जूल. ओके तो सो अब आपको पता लग गया कि डीसी सर्किट में ओपन कर सर्किट को कैपेसिटर ओपन करेंगे, और इससे क्या है हमारा क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है. ओके सो नाउ आई एम गिविंग सम होमवर्क. ओके एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क कर लेते हैं. W2 कैसे करा? हाफ सी V1 स्क्वायर. C पता ही है 2 मिली फैरेड C1, और V1 पता ही आपको 2 and 8. ओके आगे चले. यस सर. ओके so a capacitor is given whose C value is 200 microfarad. Okay, ठीक है. So we are voltage profile is given as this one. Okay, so this is 50. Okay, and this is time is given as 1 2 3 and this is 4 seconds. So this is V. Okay, and this is time T. So this is given and capacitor value is given. Okay, he's saying what is the current profile. Okay, that means now you have to draw current with respect to time. Okay, calculate कैसे करोगे? पहले तो वैसे C dV by dt होता है. हाँ I equal to C dV by dt होता है. ओके तो dV dt कैलकुलेट कर लो, या फिर पहले V को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, VT. ओके सो VT, सो सर ये 1 सेकेंड है, 1 2 3 लिखा इधर. ओके 3 4 सेकेंड है, and this is 50 milliampere, here है minus 50 milliampere. The symmetric graph 50 voltage value. Okay, now we have one time 0 to 1 second dV dt positive, then 1 to 3 second same equation. Okay, up to 3 second, and then 3 second to 4 second again rise. So हमको 3 इक्वेशन लिखनी है, और उसके बाद तो क्या dV dt 0 है तो करंट 0 हो जाएगा. ओके तो हमको लिखनी है 4 इक्वेशंस. ओके तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 50t. वेरी गुड, 50t. ओके सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी?
-50t plus 100 -50t plus 100. ओके, ये इसके लिए टाइम पीरियड क्या है? तो प्लस 100 4 सेकंड का टाइम पीरियड क्या है? अच्छा सर, ये 1 से 3 1 से 3, वेरी गुड। ओके, सो 1 से 3। ये इक्वेशन लिखना सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर आ रहा है सर। जिसको नहीं आ रहा बताओ। सर एक बार ही बता दीजिएगा। सर एक बार बता दीजिए। सो दिस सपोज ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो क्या होती है? y इक्वल टू mx ही होती है। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन में क्या है, स्लोप कितना है? -50 स्लोप निकालना में यहीं पे निकाल लो, ठीक है। जैसे 1 to 2 -50, ओके, -50t है, -50t, ओके, प्लस c। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो t इक्वल टू 2 पे ये 0 है, t इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर रख दो t इक्वल टू 2 -50 × 2 प्लस c is 0, तो c क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस -50t, ओके। अब थर्ड का निकालो, इसका निकालो, 3 to 4। सर 50t - 200 50t प्लस है -200, वेरी गुड। अब पॉजिटिव आएगा ना, बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में अदरवाइज 0 है। 3 रहेगा ना? हाँ, 2/3 रहेगा ना? 2 बाय कैसे? और टाइम पीरियड इन बिटवीन 2 and 3 नहीं, 2 ये तो एक ही है यहाँ तक, तो ये 3 to 4 है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो वी आर राइटिंग 3 इक्वेशन। इसके लिए पूरी एक ही लाइन, ये पूरी एक ही इक्वेशन है ना, इसके लिए तो एक ही लाइन है, एक ही इक्वेशन है, सेम लाइन ही है, ठीक है। 1 to 3। So now you know V, okay, you can calculate dV by dt कितना हो जाएगा? 50 dV differentiate, okay, for 0 to t to 1, okay, this is -50 for period 1 to t 3 second, and again plus 50, okay, plus 3 to t to 4 and 0 otherwise, okay. Now I want to write current. So current value, okay, करंट क्या होती है? I C dV dt, I into I is equal to C dV by dt। C से मल्टीप्लाई करना है, C कितना है? 200 माइक्रोफेरेड, ओके। सो 50 into 200 माइक्रोफेरेड, 50 into 200, 10⁻⁻6, 10 milliampere 10 milliampere, okay. So this will come 10 milliampere current value for period 0 to t 1, ठीक है। फिर कितना आएगा? -10 milliampere for 1 to t 3, and then again 10 milliampere for time is equal to 3 to 4, okay, and 0 otherwise, और अदर टाइम के लिए 0 हो जाएगा, ओके। अब इसको प्लॉट कर दो, प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा? स्क्वायर वेव टाइप स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। I तो पहले 0 to t 1 सेकेंड तक दिस इज 10 milliampere, ओके। उसके बाद में 1 to t, so this is 1 second, this is 2 second, this is 3 second, this is 4 second, okay. Then 1 to 3 -10 milliampere, okay, दिख रहा है ना इसमें -10, हाँ सर, ओके। और उसके बाद में क्या है? 3 to 1 10 milliampere again, so this is your and 3 to 4 okay, 10 है इधर, ओके। और उसके बाद तो 0 है, दिस इज आंसर, ओके। नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं? सर हाँ बोलो। सर ये जो वर्टिकल लाइन है, मतलब 0 to 1 और 1 to 3 के बीच में सर ये जो लाइन आ रहा है वर्टिकल, ये सर ये ब्रेकिंग वाला लाइन होगा ये ना? ब्रेकिंग है ना, राइज ब्रेकिंग है ना, तो राइज हो रहा है, तो सडनली तो आ नहीं सकेगा, तो ऐसे आएगा ऐसे करके अच्छा आएगा, सर, ठीक है। ओके सर। वो क्या है कि जो ये टाइम पीरियड है उसकी कंपैरिजन में ये टाइम पीरियड पर शॉर्ट होता है,
ये मिली सेकंड चल रहा है, वो माइक्रो सेकंड होगा, तो फट से इंक्रीज हो जाएगा ऐसे करके, तो हमको दिखेगा नहीं कि वो ऐसा रहता है, वो कैसे कैसे हो रहा है। ओके, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत छोटा रहेगा वो। ठीक है, सो दिस वाज योर कैपेसिटर। ओके, now actually I wanted to show IV characteristics also, कि कैपेसिटर का IV characteristic कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टाइम है तो बता ही देता हूँ मैं। So suppose okay, this V is given, okay, and this is my T, okay, and this is my 1, this is 2, okay, 0. So ये VT प्रोफाइल दे रखा है कैपेसिटर का, ओके, एंड दिस इज गिवन एज 1 वोल्ट। ओके, नाउ कैपेसिटर का IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? मैंने एक ग्राफ तो I इक्वल टू क्या होता है, C dV अपॉन dt। ओके, सो ये जो ग्राफ खींचा था मैंने, दैट वाज वर्सेस I वर्सेस dV बाय dt। ओके, यस सर। बट मुझे चाहिए ग्राफ I वर्सेस V। ओके, सो I वर्सेस V ग्राफ कैपेसिटर के लिए फिक्स नहीं होता है, दैट डिपेंड्स कि आपका dV dt का प्रोफाइल क्या है। सो इफ आई एम अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ रैंप, then what will be the IV characteristics? So we can draw now. Okay, so for this kind of ramp I can draw. Okay, so given. Okay, so what is the equation for V? Equation for V? What is the equation? Tell me. So V equals to T. T, very good. For period 0 to 1 0 second. to 1. Very good. Okay, and then minus T plus 2. नहीं check करो इससे कैसा आएगा। -T plus 2. 2 minus T तो नहीं आएगा। 2 minus T। हाँ सर, -T plus 2 वही चीज आ गई। हाँ वही चीज, माइनस टी प्लस 2। ओके ठीक है, t इज Yes, इक्वल sir. टू 2 पे ये हो जाएगा 0, सही है, और t इज इक्वल टू 1 पे भी ये जाना चाहिए 1, तो 1 दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज 1 t 2। ओके, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट dv अपॉन dt। ओके, dv अपॉन dt। ओके, so dv upon dt, this will be 1, okay, 0 t 1, okay, and this will be -1, okay, 1 t 2, okay, so I will be I c dv dt, okay, so c value I didn't give, I say c value is c, okay, let's c value is c, okay, so c value, so I will be now c, okay, c or minus c 0 t 1, okay, 1 t or 2, okay, c can be anything, 2 microfarad, 3 microfarad, we want you can take 2 microfarad, okay, 2 microfarad, okay, then this will be 2 microfarads. So now I want to plot I can plot I versus t graph, that अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, I function of t था, I want to draw I function of v, okay, so now how to plot I function of v, okay, so this is, okay, this is I, okay, as function of v, okay, so now v is also function of time, okay, so at suppose in the so suppose at t is equal to 0, okay, so current, we have current two values, okay, one is for this interval and other for this interval, okay, so अगर हम जब voltage change कर रहे हैं, okay, so we are getting, so for this time period my voltage is increasing from 0 to 1, okay, my voltage is increasing for 0 to 1, so I'm coming from 0 to 1 here, okay, for first thing. So when I'm increasing 0 to 1, when my scan rate is positive, okay, I'm getting positive current always and constant value. We see, suppose C is given as 2 into 10 raised to power minus 6 farad, okay, I'm getting constant value. When I'm reversing, okay, reversing matlab real equation, okay, when time is increasing, time is 0 to t, my v is increasing, okay, and now 1 to t, so t यहाँ पे लगोगे 1.5, तो क्या होगा, आपका v घटता जाएगा. So when v is decreasing, I am again getting current, but that current is now minus 2 into 10 into minus farad, okay. That means now if I plot my IV curve, okay, this will come like a box, okay, this is I and this is my V, okay.
So V can increase only up to 0 to 1 with time. Okay, my V can only increase from 0 to 1. Okay, and when it is increasing 0 to 1, my current is positive. Okay, and my second time, when my voltage is decreasing, my voltage coming from 1 to 0 in 2 seconds. Okay, this is the first second. In first second, my voltage going from 0 to V. That time current is constant value. And second second, and from 1 to 2 second, my voltage is decreasing. ये क्वेश्चन है ना वोल्टेज का. हाँ सर. पहले ये टाइम के साथ में फिर ये. So when my voltage is decreasing, when time is increasing, my voltage is decreasing. Okay, ये up to 1 second है, 0 second, 0.1 second, 0.2 second, so 0.1 volt, 0.2 volt, 0.3 volt, 0.5 volt, up to 1 volt when t is equal to 1. Okay, and then when it is 1.2, it become 0.8, voltage become 0.8. Okay, it is when 1.5, my voltage become 0.5. So now second time, what is happening? My voltage is decreasing. Okay, voltage going this way and current is negative. So IV characteristics, okay, for a capacitor, okay, ideal capacitor for given voltage ramp, this type of voltage ramp is a rectangular curve. Okay, पर एक्चुअल में जब हम लेबोरेटरी में करते हैं इसको तो ये रेक्टेंगुलर नहीं आता है. Okay, so when I work in my PhD, I used to work super capacitors. Okay, so super capacitor, if you're using some carbon materials, okay, so carbon material generally have ideal capacitor type behavior. So they will give the CV like it's a rectangular curve. Okay, but what happens in every capacitor, there is some resistance also there in parallel. Okay, so when there is some resistance, okay, हाँ, यहाँ हमने करंट और वोल्टेज ये सब समझ में आया, लेकिन यहाँ हम टाइम का वेरिएशन देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से प्लॉट कर रहे हैं. तो टाइम के वेरिएशन से तो वोल्टेज भी तो चेंज हो रहा है भी. ये क्या है, टाइम अगर 0.1 है तो यहाँ वोल्टेज कितना है, 0.1 है. करेक्ट है सर. लेकिन अभी जो ग्राफ है उस पे हमें ऐसा दिख रहा है कि 0 to 1 ये जो वोल्टेज है उसमें करंट के दो वैल्यूज. तो उसी टाइम भी वो तो चल रहा है ना भी. मैंने तो एक मेरे कैपेसिटर को मैंने करंट दे दिया 0 to 1 सेकंड में. ठीक है, अब उसका करंट भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, उसका वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, बिकॉज दे आर रिलेटेड ना. I इज इक्वल टू C dV अपॉन dt. ओके, अब मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, इसको मैंने एक फिक्स करंट दे दिया तो ये फिक्स हो गया, तो dV dt फिक्स हो गया. जैसे ही मैं एक सर्किट में करंट फ्लो करूंगा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा. कैपेसिटर चार्ज होते ही उसका वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ही मैंने करंट को रिवर्स करूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा. ओके, so that happens simultaneously when I'm giving current, okay, with respect to time. Okay, is voltage also changing? क्लियर है? वही तो मैं वही तो कर रहा हूँ, टाइम के साथ में वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं टाइम के साथ वोल्टेज ऐसे बढ़ रहा है 0 to 1 second. Okay, and then 1 to 2 second again voltage happening this time. In same time, what is happening current? In this period current is positive and this period current is negative. तो मैं इनको एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ IV characteristics. Okay, clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है. Yes sir. And then if there is a R, if you include a practical capacitor, there is a resistance also. That time you don't get this rectangular. That time you get something like a ellipse type of graph like this. Okay. If it is a double layer capacitor, so you get something like this. Okay. थोड़ा सा curve change हो जाएगा. And then there is a lot of other things also there. Okay. So we'll discuss some other time. Yes sir. हाँ बोलो. हाँ सर, ये तो हम लोगों ने एक सिंपल केस कंसीडर किया, बट क्या इन जनरल हम लोग किसी भी कैपेसिटर के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वोल्टेज प्रोफाइल के लिए? किसी भी कर सकते हैं, और आइडियल तो आपको एनालिटिकली इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए आपके पास. ये वोल्टेज प्रोफाइल देने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. जैसे ये हम लोग मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन में. ओके, वहाँ देयर वी अवेलेबल दिस टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रैम्प्स. ओके, सो इफ यू अवेलेबल यू वोल्टेज की विद रिस्पेक्ट टाइम प्रोफाइल अवेलेबल है. ओके, देन यू कैन टेक द रिस्पांस. ओके, आपके पास सोर्स मीटर है, सप्लाई है एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ओके, सोर्स मीटर है जो करंट दे भी सकता है और मेजर भी कर सकता है, सोर्स मीटर. ओके, देन यू कैन प्लॉट एनीथिंग. Okay sir. Okay sir. So this was your capacitor. Okay, so tomorrow we'll solve some examination problem on capacitor. Okay, and then we'll see
what inductor also. Okay, and actually capacitor बहुत important है. Okay, physics वालों में पेपर्स आते हैं, उसमें capacitor पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि capacitor पे ज्यादा रिसर्च होती है. Okay, so we will see inductor also. So one homework. This is given 20 microfarad. Okay, this is 30 microfarad. Okay, and this is 6 kilo ohm. Again, there is a resistance 3 kilo ohm, I think 1 kilo ohm. This 3 kilo ohm. Okay, so asking under DC condition, voltage value I have to check कितना दे रखा है. Just give me 1 second. So voltage value. volts. Okay. So this one now voltage value 50 volts. So asking under DC conditions, okay, calculate the store energy. Okay. So this 30 microfarad is 20. Okay. So stored energy, okay, in DC condition. Okay. So I'm stopping my class here. अगर किसी स्टूडेंट को जो अब तक कराया है उसमें कोई इशू है, नोड एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है, so I will arrange an extra class for those students. Okay, they can ask their doubts and we can revise also. Okay, so कब करना है बताओ, रिवीजन कब करना है? हाँ सर, संडे को. Am I audible now? रिवीजन कब? Yes. संडे को तो पेपर है सर. हाँ, संडे को पेपर है सर. संडे को शाम को. जब तुम बोलोगे तुम अवेलेबल होने चाहिए हो. संडे को, मंडे को सुबह, whenever you available, you decide. सुबह नहीं, संडे को शाम को, और संडे को कभी भी चलेगा, मंडे को सुबह, Okay, शाम को. Okay, so then you tell this thing to Satish. Okay, what time you're available? Okay, or give me or you can message me also. I will make the class arrange. Okay. Yes sir. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.